Very good morning to all of you. We'll wait for 2 to 3 minutes. Some students are yet to join. Please join the meeting on time, students. Good morning. So, have you all revised the topic? And I have sent you the PDF of yesterday's session, whatever I have taught you. Okay. So, read किया सबने? Prepared for answering questions? Good. Okay. So, एक क्वेश्चन था कि व्हाई हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स. देखो, न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी को मिलने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? व्हाट वी यूज? हाउ डू वी एक्वायर न्यूट्रिएंट्स? फ्रॉम द फूड. ओके, तो जो कुछ भी हम लोग फूड लेते हैं वहां से अपने को न्यूट्रिएंट्स मिलता है. हम लोग थोड़ी हॉर्मोन्स, रेडीमेड हॉर्मोन्स खाते हैं क्या? नहीं ना. डेली डाइट में हम लोग हॉर्मोन्स नहीं खाते, राइट? तो हॉर्मोन्स अपना बॉडी खुद बनाता है. दैट्स व्हाई हॉर्मोन्स व्हिच आर देयर, these are non nutrients. Okay, even if hormones are proteins, hormones are made up of amino acids and all. Understood? Okay, so in last session we have studied about the properties of hormones. बराबर? So उसमें मैंने क्या बोला था? कौन सा वाला जो हार्मोन है that is having low molecular weight, सबसे छोटा है वो हार्मोन. टेल मी. ADH. वेरी गुड. ओके, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. अच्छा. ओके, देन हार्मोन्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगता है अपने बॉडी को या कम क्वांटिटी में लगता है?
लो कॉन्सेंट्रेशन, यस, ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन फॉर इट्स फंक्शनिंग, ज्यादा कम भी नहीं चाहिए और ज्यादा ज्यादा भी नहीं चाहिए हार्मोन, इजंट इट? और मैंने एक्सक्रीशन का आपको बोला है 5 वीडियोस, पहले वाले 5 वीडियोस सब देखो और सैटरडे के लास्ट हाफ एन आवर सेशन में जो कुछ भी डाउट रहेगा वो क्लियर करो। सी बट योर डाउट शुड नॉट बी आउट ऑफ द ट्रैक। आप एमबीबीएस में जो पढ़ने वाले हो वो आप सोचोगे यहाँ पे तो ये मीन्स यू आर गोइंग आउट ऑफ ट्रैक। आपका जो प्रिपरेशन है ना, हम लोग जो सिखाते हैं वो बहुत ही ज्यादा रहता है, एनसीईआरटी लेवल से भी बहुत ज्यादा डीप में जाते हैं हम लोग टॉपिक का। सो डोंट थिंक इन दैट वे, अरे ये ऐसे ऑपरेशन किया तो फिर उसमें ये वाला चेंजेस होगा तो वो क्या एग्जैक्टली इफेक्ट करेगा। दैट एवरीथिंग विच इज देयर इट विल बी देयर इन द सिलेबस ऑफ एमबीबीएस। ठीक है, तो आपको जो लेवल के लिए स्टडी करना है उसके हिसाब से जो कुछ भी आपको सिखाया जाता है उसमें कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क। डोंट थिंक एनी अदर थिंग्स डीप में जाके फिर वो ऐसे होता है क्या, फिर कैसे ऑपरेशन करते होंगे, एनेस्थीसिया कब देता है वगैरह, ये क्वेश्चंस जो है ना वो आपको खुद ब खुद आप जब ये एमबीबीएस में जाएंगे तभी क्लियर होंगे। समझ में आया? तो वट एवर टॉपिक हैज बीन टॉट उसमें कुछ डाउट रहेगा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। और मैं ऐसे भी बोलती हूँ, कोई भी टॉपिक आप आप पढ़ते हो तो एट दैट टाइम यू शुड थिंक ऑन दैट वे ओनली, वट एवर टॉपिक हैज बीन टॉट बाय दैट पर्टिकुलर फैकल्टी। जो आपको सिखाया गया है और समझ में आया है उसके ऊपर फोकस करो, नॉट ओनली दैट कि हाँ और ज्यादा मैं ये टॉपिक के डीप में गई तो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, जो कि आपको कुछ सिखाया नहीं है उसके रिलेटेड। ऐसे नहीं करना है, ठीक है? समझे? और वैसे मैंने आपको बोला कि नीट का पेपर आपको देखना है तो नीट का पेपर आप देखो, देखिए क्या आपने क्वेश्चंस 2020 के इजी थे एंड यू मस्ट हैव सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस आल्सो। हम्म, तो इसका मतलब ये बात नहीं हुई कि आप सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ोगे, क्लास में जो कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है यू हैव टू लर्न दैट आल्सो। ओके, बिकॉज क्या है ना, अभी ये कोरोना का पैंडेमिज्म के कारण भी बहुत ज्यादा इजी निकाला होगा वो लोग ने पेपर, तो यू कैन नॉट से दैट एवरी टाइम इजी रहेगा पेपर एकदम। ओके, सो नाउ बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछा करूंगी। अभी हम लोग फोकस करते हैं ओवर द नेक्स्ट टॉपिक। हॉर्मोन्स का स्पेलिंग गलत हो गया है यहाँ पे, सो HOR इट इज। और आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो व्हेन आई फिनिश विथ वन सब टॉपिक यू कैन आस्क मी। ओके, एंजाइम बायोकैटालिस्ट का काम करता है, फास्टन करता है रिएक्शन। ओके, गॉट इट? बायोकेमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है बट इट एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, वेर इन हॉर्मोन्स विच आर देयर, हॉर्मोन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो सेल्स का है वो एक स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा हॉर्मोन्स। ओके, गॉट इट? एंजाइम्स भी नॉन न्यूट्रिएंट ही है, बॉडी में बन रहे हैं एंजाइम्स, हम लोग एक्सटर्नली कंज्यूम नहीं कर रहे एंजाइम्स। ओके, so now let's start with the topic. ठीक है प्रतीक। So hormones and their classification. So in this particular topic, firstly we'll discuss कितने सारे different अलग-अलग hormones है। Okay? अरे ये क्या? एक मिनट। हेलो, आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है?
आपको स्क्रीन दिख रहा है? पीपीटी पीपीटी दिख रहा है? हार्मोन एंड इट्स क्लासिफिकेशन लिखा हुआ। ओके, बट यहाँ से मीटिंग से आउट हो गई है। रिटर्न टू मीटिंग, हैंग हो गया है शायद से कंप्यूटर। वेट अ मिनट। ओके, अभी दिख रहा है। हाँ, सो hormones are chemically what? They are the chemically, if we classify the hormones, there are 4 different types of hormones. Okay, for example, first one is amine hormone, second is peptide and protein hormones. Okay, then third one is steroid hormone, and fourth is fatty acid hormones, which are derived from fatty acids. Hormones derived from fatty acids. Which fatty acids? Essential fatty acids. Not all essential fatty acids. Essential fatty acids such as omega 3 and omega 6 fatty acids. Okay, got it? So, how many? 4 different types of hormones can be there depending upon their composition. Amine hormones में amino group रहता है and amine hormones single amino acid से बना हुआ रहता है. ओके, सिंगल अमाइनो एसिड से डिराइव किए हुए अमाइन हॉर्मोन्स रहते हैं. पेप्टाइड हॉर्मोन्स 3 to 200 अमाइनो एसिड से बने हुए रहते हैं. ओके, सो पेप्टाइड हॉर्मोन्स कैन पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन क्यों बोला है? बिकॉज बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड्स रहेंगे और वो अमाइनो एसिड्स के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन है तो वो क्या हो गया? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन. Glycoprotein hormone where the protein is bound to the carbohydrate. Okay, then steroid hormones are derived from cholesterol. Cholesterol ये डिटेल में हम लोग करने वाले हैं लर्न. Okay, then hormones which are derived from the fatty acids. Okay, fatty acids such as omega 3 and omega 6 fatty acids. ठीक है, so now let's study about the classification and details of these. Examples. Examples बहुत important रहते हैं biology में. So please remember examples. In botany also so many examples are there. So please focus on that also. Okay. So classification of hormones. मैंने 4 classifications बोले आपको. ठीक है. तो अमाइन हॉर्मोन्स मैंने क्या बोला? अमाइन हॉर्मोन फर्स्ट टाइप ऑफ हॉर्मोन जो हम लोग लर्न करने वाले हैं एंड दे आर ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल अमाइनो एसिड. ओके, सो अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है, बराबर, अल्किल ग्रुप रहता है, हाइड्रोजन एटम इज देयर एंड अमाइनो ग्रुप इज देयर. ठीक है, सो ये जो अमाइनो ग्रुप रहता है अमाइनो एसिड का वो separate होता है from the rest molecule of amino acid. Okay, and when this amino group is joined to the catechol chemical. Okay, catechol molecule के साथ जब भी ये amino group join होता है तभी 2 types of hormones can be formed. One is epinephrine and another one is non-epinephrine. Okay, epinephrine and norepinephrine are also known as adrenaline and noradrenaline. Okay, adrenaline and noradrenaline. Okay, ये दोनों hormones जो है
which part of the gland produces this? Adrenal medulla. Adrenal medulla. ठीक है? Then thyroxine. Thyroxine, which is there, it is a hormone which is produced from one single amino acid, and name of that single amino acid is tyrosine. Tyrosine. All of you understood? So which is the single amino acid which is responsible for thyroxine? Tyrosine. Which is the amino acid from which epinephrine and norepinephrine is obtained? Not you can say this is quite catecholamine is amino acid. Catechol एक ग्रुप है, ओके जैसे अमाइनो ग्रुप है वैसे कैटेकोल एक ग्रुप है, वो अमाइनो ग्रुप से अटैच हो जाता है, एंड एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन इज फॉर्म्ड. ओके सो अमाइन हॉर्मोन्स वेरी सिंपल, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल अमाइनो एसिड. इज इट क्लियर? नाउ सेकंड वन इज स्टीरॉयड हॉर्मोन्स. Okay, steroid hormones which are there, these are derived from cholesterol. Okay, cholesterol is the one form of lipid, okay, from which steroid hormones are obtained. Okay, and all steroid hormones which are there, these will have sterol group. जैसे कि all amine hormones are having amino group, likewise steroid hormones which are there, these will have sterol group. Okay, got it. Then example of steroid hormone, एड्रिनल ग्लैंड आपको पता है जो कि किडनी के अबाव रहता है. मैंने क्या बोला? एड्रिनल मेडुला प्रोड्यूसेस एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन. ओके, एड्रिनल कॉर्टेक्स व्हिच इज देयर, इट विल प्रोड्यूस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एल्डोस्टेरॉन. ओके, सो एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स जो है, दैट दोज ऑल हार्मोन्स आर स्टीरॉयड हार्मोन्स. So which are the three hormones of adrenal cortex of adrenal gland? Glucocorticoids, mineralocorticoids and aldosterone. Okay, then steroid hormones can be estrogen and progesterone also. Okay, estrogen, progesterone, testosterone, all these are the steroid hormones. So इसके ऊपर question आ सकता है steroid hormones के ऊपर, most likely question which is asked in exam. Okay, so steroid hormones कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. टेस्टोस्टेरॉन भी, टेस्टोस्टेरॉन. ओके, सो टेस्टोस्टेरॉन इज वन फॉर्म ऑफ एंड्रोजन, एक फॉर्म ऑफ एंड्रोजन है वो. देन प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन. ओके, पॉलीपेप्टाइड मीन्स बहुत बड़ा लंबा चेन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, सो पेप्टाइड हार्मोन्स कैन बी मेड अप ऑफ 3 अमाइनो एसिड और दे कैन एक्सटेंड टिल 200 अमाइनो एसिड्स आल्सो. ओके, बहुत सारे अमाइनो एसिड किससे लिंक्ड रहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड रहते हैं, इसीलिए प्रोटीन को पेप्टाइड भी बोला जाता है. Got it? Because protein is made up of amino acid, and each amino acid which is there, it is joined by peptide bond. Okay, got it? So peptide hormones are also known as protein hormones. Okay, because protein polypeptide chain में peptide bonds से linked रहते हैं amino acids. Okay, then example of protein hormones, hormones of anterior pituitary. Anterior pituitary, anterior pituitary means anterior lobe of pituitary is involved in production of FSH, that is follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, then growth hormone, then adrenocorticotropic hormone. बराबर, ये सारे. then ICTH, interstitial cell stimulating hormone. All these hormones which are there, these are polypeptide, peptide or protein hormones. Okay, got it? Then you can also write example of this also, that is मैंने लिखा है नीचे, that is pancreas hormone. Pancreas hormone, I'll rub out afterwards this because I have written that. Pancreas which is there, it is
responsible for production of four hormones. Okay, that is insulin. ये कल मैंने सिखाया था आपको, ग्लूकागॉन. ओके, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, then somatostatin and polypeptide hormone FF, which is denoted by FF. Okay, got it? So insulin, glucagon and polypeptide hormone and somatostatin hormone. So these are the different hormones which are produced by the pancreas. Okay, so all these hormones which are there, these are made up of polypeptide. Okay, insulin, glucagon, ये क्या है? Long polypeptide hormones है. Long polypeptide hormones है. And short polypeptide hormones, oxytocin and ADH, antidiuretic hormone. ठीक है? Then parathyroid gland, which produces parathormone. Okay, parathyroid gland which is there, it will produce parathormone. So what is parathormone? Parathormone is the hormone which is produced by parathyroid gland and it increases the calcium level in the blood. Parathormone. Okay, got it? So ये बात है. So understood. Short peptide hormone. Which are the short peptide hormone? Oxytocin and ADH. Which are the long peptide hormones? Insulin, glucagon. Okay. Then all the hormones of this anterior pituitary. Anterior pituitary के सब hormones. Then MSH. MSH, that is relaxin. MSH is melanocyte stimulating hormone. Then relaxin, which is produced by the uterine wall during pregnancy. Okay, whenever there is parturition. समझ में आया? Then HGH, HCG. Okay, HCG, human chorionic gonadotropin hormone. So all these hormones which are there, these are long chain polypeptide hormones. Long chain polypeptide hormone. So look here, I have written here in this box. Okay, short peptide hormones and long peptide hormones. Is it clear? Here you have to add testosterone. Okay, testosterone. Then parathormone is the hormone which is produced by the parathyroid gland. HCG, it is written here. Okay, now next type of hormone which is there, that is hormones which are derived from fatty acids. Okay, एक मिनट, जैसे हम लोग लिखे थे वैसे. Okay, so the hormones which are derived from the fatty acids. So which are the fatty acids from which these hormones are derived? कौन से वो? ओमेगा 3 fatty acids and omega 6 fatty acids. Okay, so which are the hormones which are obtained from these fatty acids?
there is one hormone which is obtained from this fatty acid, that is prostaglandin. Prostaglandin. Okay, so prostaglandin is the hormone which is obtained from fatty acids. Understood? So this is all about the classification of hormones. ठीक है? So again we'll just go through again with the classification. Amine hormones which are there, these are derived from amino group of the amino acid, single amino acid. Okay, so catecholamines which are there, catechol group is attached to the amino group of the amino acid. Example of that is epinephrine and norepinephrine. Okay, epinephrine and norepinephrine. Then thyroxine is the hormone which is derived from tyrosine amino acid. Then steroid hormones are derived from cholesterol. Okay, cholesterol se derive hota hai and they have sterol group in that. Okay, example of this is all the hormones of adrenal cortex of adrenal gland, that is glucocorticoids, mineralocorticoids and aldosterone. Then estrogen, progesterone and one more was there, that is testosterone. ठीक है. Then peptide hormones or polypeptide hormone or protein hormone. Peptide hormones which are there, these are made up of 3 to 200 amino acids. Okay, got it? So these are, as they are made up of amino acids, they are also known as protein hormones. And why they are known as peptide hormones? Because all the amino acids are attached to one another by peptide bond. Okay, example of protein hormones: ACTH, FSH, LH. Okay, then growth hormone, interstitial cell stimulating hormone. All these are the examples of protein hormone. और क्या बोला था प्रोटीन हार्मोन का एग्जाम्पल? डू यू रिमेम्बर? पैनक्रियाज का हार्मोन्स बोला था ना मैंने. Insulin, glucagon, somatostatin, polypeptide, all these hormones are the examples of protein hormones. And one more was there, that is parathormone, which is produced by parathyroid gland. Okay, then fatty acid hormones which are derived from the fatty acid, essential fatty acids. Which essential fatty acids? Omega 3 and omega 6 fatty acids. Okay, got it? So omega 3 and omega 6 fatty acid से derive किया हुआ जो हार्मोन है, that is prostaglandins. Okay, prostaglandins. Prostaglandins are the local hormones which will fasten the contraction of the smooth muscles whenever they are produced in that particular region. Okay, so कोई भी region में जहाँ पे prostaglandin produce होता है वो क्या करते हैं? Fasten the smooth muscle contraction. समझ में आया? Okay, so this is all about classification of hormones. Next one. ओके अभी हम लोग देखते हैं विच आर द डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं एंड व्हाट आर द हार्मोन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, so first very important, which is the supermaster endocrine gland, which is also known as master endocrine gland also. Supermaster hypothalamus. Okay, got it?
और एंड मास्टर बोला तो पिट्यूटरी and sometimes it is only as master endocrine gland and option is not given like that means hypothalamus दिया है pituitary नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे hypothalamus is the correct answer पे ठीक है so hypothalamus is the master endocrine gland which governs all the activities of all endocrine glands which are present in our body ओके गॉट इट सो पिट्यूटरी ग्लैंड को वो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड के विच पार्ट एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड okay and when the anterior lobe of the pituitary gland will receive the signal from the hypothalamus then there will be production of the specific hormone by pituitary gland. For example, मैंने कल ही बोला आपको कि TSH will be produced by the pituitary gland when there is deficiency of thyroxine in the blood. Okay, अभी thyroid gland को thyroxine बनाने को stimulate करना है तो क्या करना पड़ेगा पहले hypothalamus को releasing hormone भेजना पड़ेगा okay TSH that is thyroid stimulating hormone releasing hormone will be sent by the hypothalamus towards the pituitary gland which lobe of the pituitary gland anterior lobe of the pituitary gland will be learning the structure of the pituitary gland also okay so pituitary gland में lobes रहते हैं anterior lobe and posterior lobe so anterior lobe के पास ये message जाएगा through this hormone okay then what will happen pituitary gland will start producing TSH and TSH will then enter in the blood and it will go towards the thyroid gland okay so thyroid gland के पास जाएगा वो and then thyroid gland will produce T3 and T4 hormones okay that is triiodothyronine and tetraiodothyronine समझ में आया ओके देन वैसे ही अगर अभी T3 एंड T4 हार्मोन थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करने लगा ओके कॉमनली T3 एंड T4 को क्या बोलते हैं थायरोक्सिन बोलते हैं ना सो थायरोक्सिन अभी बहुत ज्यादा हो गया बॉडी में और जाना नहीं चाहिए इनफ है उतना तो नेगेटिव फीडबैक से क्या हो जाएगा दिस अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन विल इनहिबिट production of TSH by pituitary gland. How hypothalamus will now send message to the anterior lobe of pituitary by producing thyroid stimulating hormone inhibiting hormone. Okay, so this will reach the anterior lobe of pituitary and anterior lobe of pituitary will not produce at that time TSH and no more TSH will be entering in the blood so no thyroid gland will stop them producing T3 and T4 hormone okay got it so releasing and inhibiting hormone all of you understood ऐसे ही हर एक anterior lobe में जो कुछ भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है वो सीक्रेट होना है या नहीं होना है that will be decided by the releasing hormone and inhibiting hormone which will be produced by the hypothalamus इसका मतलब अल्टीमेटली डिसीजन कौन ले रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब फंक्शन करना है या नहीं करना है वो डिसीजन कौन ले रहा है अल्टीमेटली यस राइट चेल्सी राइट और हाइपोथैलेमस तो हाइपोथैलेमस बॉस हो गया ना किसका बॉस हुआ एक्चुअली स्पीकिंग वो ऑर्डर किसको दे रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को दे रहा है बट पिट्यूटरी ग्लैंड सभी हार्मोन्स बना रहे हैं ना जो कि सारे दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिम्युलेट कर रहा है बराबर ग्रोथ हार्मोन सोमैटिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन मैमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा एफएसएच ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा बराबर तो हाइपोथैलेमस इसीलिए वो मास्टर है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है एंड इंटर्न पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोलिंग अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो उसको सुपर मास्टर बोलेंगे तो और ज्यादा करेक्ट है हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर एंड पिट्यूटरी मास्टर बिकॉज पिट्यूटरी ये
स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स बना रहे इसके ऑर्डर की वजह से। आई बात समझ में? ओके, सो हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर लोब में पिट्यूटरी के जाते हैं और फिर जाके ये जो हॉर्मोन्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे ये स्टिम्युलेट होते हैं एंड दे विल बी प्रोड्यूस डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, not that every time there will be continuously production of growth hormone, prolactin and everything. ओके मैंने जैसे बोला अभी ये टीएसएच सिक्रीट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब तभी सिक्रीट हो रहे हैं बाकी के हॉर्मोन्स भी. इट इज स्पेसिफिक इजंट इट? ओके, तो ये हो गया एक सिक्रीशन हाइपोथैलेमस का, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन व्हिच इज कंट्रोलिंग व्हिच लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब. ओके, अभी आपको आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, अरे पोस्टीरियर लोब भी कंट्रोल करता होगा, ये मास्टर है तो बराबर. पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय हाइपोथैलेमस. ओके, हाउ? अभी हाइपोथैलेमस के पास ऐसे कुछ न्यूक्लियाई रहते हैं. ओके, टोटल 11 न्यूक्लियाई आर देयर. न्यूक्लियाई इन द सेंस नॉट दैट न्यूक्लियस, हाँ, सेल का न्यूक्लियस. हियर न्यूक्लियाई इन द सेंस हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है बराबर. डायनसेफेलॉन का फ्लोर है वो हाइपोथैलेमस. फोर ब्रेन का डायनसेफेलॉन एक पार्ट है, डायनसेफेलॉन का फ्लोर है हाइपोथैलेमस. ओके, सो नर्वस सिस्टम का पार्ट है. तो नर्वस सिस्टम में आपको पता है ग्रे मैटर रहता है, व्हाइट मैटर रहता है. तो ग्रे मैटर बहुत ज्यादा रहता है ओके इन हाइपोथैलेमस. so gray matter, one gray matter means one cyton of the neuron, one cyton of the neuron. ओके, तो एक साइटोन से इतने 11 साइटॉन्स जो रहते हैं वो उसको क्या बोलेंगे आप? न्यूक्लियाई बोलेंगे. ईच वन इज नोन एज न्यूक्लियस हियर. so total 11 such cytons, that is nuclei, are present in the hypothalamus. okay, हाइपोथैलेमस में 11 न्यूक्लियाई रहते हैं, उसमें से एक न्यूक्लियाई जो है वो बनाएगा ADH एंड ऑक्सीटोसिन. oxytocin. Okay, so these nuclei which are there, these will be involved in production of ADH, antidiuretic hormone, and oxytocin. Okay, so ready-made hormone बना रहा है कौन? हाइपोथैलेमस. क्यों? because it is having nuclei which are responsible for production of these hormones. ओके, गॉट इट. अभी ये जो हॉर्मोन्स है ये प्रोड्यूस कर रहे हैं बट वो वहां पे स्टोरेज के लिए थोड़ी जगह है ब्रेन में, वो किधर भेजेगा? टुवर्ड्स द पोस्टेरियर पिट्यूटरी, posterior lobe of the pituitary. Okay, so these two hormones which are there, these will be stored in posterior lobe of pituitary gland. Okay, so this is there in the next slides. So no need of worrying that ये क्या मैम ने लिखा और फिर ये नोट्स में तो नहीं लिखा है, ऐसे नहीं है. ये जो टॉपिक है इसमें सिर्फ आपको हार्मोन्स याद रखने हैं अच्छे से, इसीलिए इतना ही काफी है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक, इसीलिए एक्सप्लेनेशन के साथ में ये लिख रही हूँ, बट ये वाला टॉपिक हम लोग अलग से लर्न करने वाले हैं. ओके, सो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन रेडीमेड मिल रहा है पिट्यूटरी को. पिट्यूटरी को कुछ झंझट नहीं है, पोस्टेरियर आराम से काम कर रहा है. पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या करेगा? सिर्फ वो स्टोर करेगा एडीएच और ऑक्सीटोसिन. ओके, और जब भी लगेगा तभी एडीएच will be poured in the bloodstream and oxytocin will be poured in the bloodstream whenever they are needed. So what is the function of the posterior lobe of pituitary? Tell me. What is the function of the posterior lobe of the pituitary?
इनहिबिटिंग हार्मोन कैसे, बिकॉज उसके पास, देखो एक मिनट, हाँ स्टोर करेगा, स्टोर हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं जय, हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर लोब में, हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स एडीएच और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हुए वो सिर्फ स्टोर करेगा. ओके, यू शुड correct this, store hormones produced by hypothalamus, posterior lobe, सिर्फ स्टोर करता है. यस, चेल्सी राइट, नेहा राइट. बाकी सब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ऋतुजा, हाँ, ये इनहिबिटिंग हार्मोन कैसे समझ में आता है हाइपोथैलेमस को कि इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करना है? बिकॉज हाइपोथैलेमस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं, okay, which will get stimulated, and these receptors will to this receptors this thyroxine which is there वो increase हुआ है ना, तो ये receptors analyze करेंगे thyroxine बढ़ गया है करके, and these receptors will then give order to the hypothalamus to produce inhibiting hormone. Gray matter is the region where the cytons which are there, these are accumulated. ओके, बट कुछ साइटॉन्स ही यहाँ पे काम में आते हैं. हाइपोथैलेमस के जो कुछ साइटॉन्स है वो बनाएंगे एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन. समझ में आया? एंड वो साइटॉन्स को न्यूक्लियाई बोला है. दैट न्यूक्लियस इज डिफरेंट, जो सेल में न्यूक्लियस रहता है वो. अंडरस्टूड ऋतुजा? क्लियर? ओके, सो हाँ, सो हाइपोथैलेमस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सुपर मास्टर क्यों बोला है उसको? बिकॉज इट इज गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी एज वेल एज इट इज गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी. मीन्स कब रिलीज करना है एडीएच, कब ऑक्सीटोसिन रिलीज करना है, ये भी वो बताएगा. स्टोर करके रख दो, मैं बताता हूँ कब भेजना है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब हाँ बोलता है बिकॉज वो मास्टर है ना. ठीक है, सो नेक्स्ट ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड. सो कितने एंडोक्राइन ग्लैंड देखे हम लोग ने अभी तक? दो. फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस एंड सेकेंड वन इज पिट्यूटरी. ओके, सो बोथ विच आर देयर, they are neuroendocrine. एक मिनट, सॉरी, हाइपोथैलेमस विच इज देयर, इट इज न्यूरोएंडोक्राइन. न्यूरोएंडोक्राइन का मतलब ये है, न्यूरो का मतलब है ब्रेन, ब्रेन का पार्ट है वो. Hypothalamus is a part of the diencephalon and diencephalon is a part of forebrain which is involved in production of endocrine hormones, releasing hormone, inhibiting hormone, ADH and oxytocin. That's why it is known as neuroendocrine hormone. Okay, समझ में आया? So which is the neuroendocrine hormone? Which are the neuroendocrine hormones? If question is asked, which are the neuroendocrine hormones? हाँ, and what about other? ADH and oxytocin. हार्मोन पूछा मैंने, ग्लैंड नहीं पूछा है. ADH ऑक्सीटोसिन न्यूरोएंडोक्राइन हार्मोन है, करेक्ट. और भी है ना, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन. ठीक है. एंड विच इज द ग्लैंड विच इज न्यूरोएंडोक्राइन? ऐसे पूछा तो हाइपोथैलेमस, बराबर, हाइपोथैलेमस. गुड. ओके, FSH, LH, J, FSH and LH which is there, it is produced by anterior lobe of the pituitary gland. ठीक है, तो ये तो anterior lobe of pituitary gland produce कर रहा है ना, तो endocrine gland का secretion हुआ, ये endocrine hormones हो गए FSH, LH. Those will not be the neuroendocrine hormones. ठीक है, चलो आगे जाते हैं. अभी नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज देयर, इट इज
थायराइड ग्लैंड. ओके, थायराइड ग्लैंड अभी अभी मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया है. थायराइड ग्लैंड which is there, it is producing three types of hormones, that is T3 triiodothyronine, then T4 tetraiodothyronine, and calcitonin. Okay, calcitonin, which is also known as thyrocalcitonin, because it is produced by the thyroid gland. Okay, it is exactly ulta of parathormone. Okay, I have told you what is the function of parathormone. parathormone का function क्या था बच्चों, मैंने बोला था आपको. parathormone ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है. जब भी ब्लड में कैल्शियम कम होता है तभी पैराथॉर्मोन विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स. ओके, बोन्स में जो कैल्शियम है वो ब्लड में आएगा, एज वेल एज जो आप खाना खाते हो उसमें जितना भी कैल्शियम रहेगा उतना एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा कैल्शियम का फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. So it increases absorption of calcium from the small intestine to increase the calcium level in the blood, as well as it will also bring about demineralization of calcium. Okay, got it. So calcium क्या करेगा, वो increase करेगा blood में पैराथॉर्मोन, and थायरोकैल्सिटोनिन उल्टा करता है. अगर blood calcium level बढ़ गया तो वो normal में लाने के लिए calcium को कम करता है blood में से. तो कैसे कम करेगा वो? calcium which is there in the blood, that excess calcium will be deposited in the bones, means it will bring about demineralization. क्या करेगा वो? demineralization करेगा. ठीक है? yes ऋतुजा, right. हाँ, so thyroid gland produces 3 hormones. याद रखो, मैं बीच में पूछूंगी तुम लोग को. then next one is parathyroid gland. ये तो मैंने अभी अभी बोला, it increases calcium level in the blood. Means can I say parathormone and thyrocalcitonin both are responsible for regulating the calcium level in the blood, because ये increase करता है calcium level और ये decrease करता है calcium level in the blood, thus maintaining proper amount of calcium in the blood. Okay, now Now next is pineal gland. Pineal gland is also endocrine gland. Okay. Pineal gland is the endocrine gland which is producing melatonin. Melatonin, which is responsible for 24-hour rhythm, that is biological clock. Sleep and wake cycle is controlled by pineal gland. Then sexual desire is also controlled by pineal gland. Darkness hormone भी बोला है, which becomes active during darkness. So pineal gland which is there, it will secrete melatonin, and it is also responsible for skin pigmentation in amphibians. Okay, change of color depending upon the surrounding environment, camouflage. Okay, then thymus is producing thymosin. Thymosin hormone which is there, it is responsible for T lymphocyte differentiation. T lymphocyte का differentiation. T lymphocytes कहाँ पे बनते हैं? They are formed in the bone marrow. Okay, formation of T lymphocytes where it takes place in the bone marrow. Bone marrow is the cavity of the long bones. Okay, so ends of the long bone में T lymphocytes बनेंगे. Okay, और ये T lymphocytes, immature T lymphocytes will be carried through the blood towards the thymus gland,
and thymus gland will then produce thymosin hormone, which will bring about maturation. It will bring about maturation of T lymphocytes. Okay, got it? So T lymphocytes mature किसकी वजह से होता है? Thymosin की वजह से. Thymosin is produced by thymus gland. Okay, which degenerates as the age increases. समझ में आया? तो कहना है से differentiation and maturation, these are the two important functions of thymus gland, thymosin. Okay, so thymosin is responsible for maturation and differentiation of T lymphocytes. Okay, then details हर एक का स्टडी करने वाले. Then adrenal gland. Adrenal gland, as I told you, adrenal gland कैसे रहता है? Pear shaped gland रहता है. Pear shaped gland, where it is present above the kidneys. Okay, excretion chapter में diagram draw किया हम लोग ने. Okay, so glucocorticoids, mineralocorticoids, and aldosterone. Okay, these are the hormones which are produced by aldosterone. Okay, these are the hormones which are produced by adrenal cortex of adrenal gland. ठीक है, then adrenaline and noradrenaline. Okay, these will be produced by adrenal medulla. Adrenal medulla. Okay, of adrenal gland. Androgen means gonadocorticoids, which will act over the sex organs. Androgens are also produced by adrenal cortex. So adrenal cortex कौन कौन से hormones बनाता है? ये भी adrenal cortex, glucocorticoids. Okay, mineralocorticoids adrenal cortex बनाता है. Androgen adrenal cortex. Okay, adrenaline and noradrenaline are produced by adrenal medulla. समझ में आया? So we'll be learning functions in detail when we'll discuss about the adrenal gland and disorders related to adrenal gland. Now heterocrine glands. Heterocrine means in very first lecture we have discussed about that. Heterocrine का मतलब ये है both are there, means they are endocrine in function as well as exocrine in function. Exocrine in function. Okay, got it? So exocrine का मतलब ये है the secretions which are there, means थोड़ा बहुत mucus secrete होता है when the egg and sperms are formed. ओके, स्पर्म्स जो भी फॉर्म होता है तो सीमेन भी रिलीज होता है ना, सिक्रीशन ऑफ अदर एसेसरी ग्लैंड्स, कॉर्पस ग्लैंड, देन कौन से ग्लैंड रहते हैं? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके, सो ऑल दीज सिक्रीशंस व्हिच आर देयर along with the gametes will be carried through the ducts. ओवरी रहेगा तो which duct? oviduct और fallopian tube. and testis रहेगा तो vasa differentia. Vasa differentia. ठीक है, so oviduct and vasa differentia, they will carry specific gametes. Okay, oviduct will carry female gamete. Okay, and vasa differentia which is there, it will carry male gamete. Okay, so इसीलिए वो क्या हो गया? Exocrine, ovaries and testes. Now why ovaries are endocrine? Because ovaries produces estrogen and progesterone. Okay, so estrogen and progesterone hormone are directly entering in the blood. Testosterone is produced by testis, which is added up in the blood. Okay, so that's why they are endocrine. Testosterone is endocrine, estrogen and progesterone are also endocrine in function. Clear? उसके बाद में pancreas. Pancreas which is there, it is responsible for production of glucagon.
ग्लूकागॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश सेल्स, बोलिए। ग्लूकागॉन कौन प्रोड्यूस करता है? अल्फा सेल्स ना। ग्लूकागॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल्स। Yes, alpha cells. Right. Niharika, Rutuja. So glucagon, then insulin, beta cells, somatostatin, delta cells, and pancreatic polypeptide FF cells. Okay. Then placenta. Placenta is the tissue which is nutritive tissue which is formed in pregnant uterus. Okay, got it. So it is for nourishment of the fetus, developing embryo in the uterus. Okay, placenta भी बहुत सारे hormones produce करता है. For example, human chorionic gonadotropin hormone, tropic hormone. Then relaxin, which increases whenever there is parturition. Okay, then estrogen and progesterone to develop more secondary sexual characters during pregnancy. इसीलिए एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करने लगता है afterwards. Then progesterone to maintain the endometrial lining of the uterus to prevent abortion and for proper nourishment of the embryo. ठीक है. Then GIT. What is GIT? Gastrointestinal hormone. Gastrointestinal hormones which are there, these will be secretin, gastrin, cholecystokinin, diocrinin, pancreozynin. These are all different gastrointestinal tract hormones. Okay, got it? समझ में आया? So these will be produced by the cells of the gastrointestinal tract. There are no as such glands here. Okay, means मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट सिखाते समय बोला था, there are certain cells which will act like a endocrine gland. Okay, so cells of the GI tract. Okay, GI tract में सब आएगा, stomach, small intestine दोनों. Okay, gastrin will be produced by the gastric lining of the stomach. Okay, duodenal mucosa secretin. Cholecystokinin भी duodenal mucosa secrete करता है. Pancreozynin, diocrinin, this is also produced by what? Duodenal mucosa. ठीक है? Then kidneys. Kidneys produces two types of hormone, renin and erythropoietin. Erythropoietin. Two hormones. And one more is there, calcitrol करके एक hormone है, that is also produced. Calcitrol. Okay. और यहाँ पे मैंने क्या बोला? Diocrinin. Diocrinin है. Then और क्या? Pancreozymin. These are the different hormones which are produced by the GI tract. Okay. Then atrial natriuretic factor, it is produced by atria of the heart. Heart का जो atria रहता है, it will produce atrial natriuretic factor A and L. Okay.
So clear to all of you. We have done very first gland, that is neuroendocrine gland. ओके, न्यूरोएंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा देखा हम लोग ने? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल, gonads, that is ovaries and testes, pancreas, placenta, GI tract, kidney and heart. Okay, so one more is there, liver. बोलिए, पता है आपको लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, कौन सा हार्मोन? 14th है ना ये. ओके, लीवर. एनीबडी हु कैन टेल मी लीवर कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? बोलो. एक मिनट. एक्सोक्राइन नहीं है वो. देखो, ओवरीज, टेस्टिस एंड पैनक्रियाज ये है हेट्रोक्राइन. एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी. रेस्ट ऑल नहीं. वन मिनट. Yes, liver produces insulin-like hormone. Okay, insulin-like hormone produce करता है liver. Okay, so liver is responsible for production of insulin-like growth hormone. Okay, and it is also responsible for production of angiotensinogen. Okay, angiotensinogen. So insulin like growth hormone and angiotensinogen, these are the two types of hormone which are produced by the liver. So insulin like growth hormone will bring about overall growth of the body, and angiotensinogen is responsible for maintaining blood pressure. Okay, by which system? RAS, that is renin angiotensin system. Okay, got it. So BP will increase. जो लो बीपी हुआ है तो उसको नॉर्मल लाने के लिए बीपी इंक्रीज करना चाहिए. सो दैट बीपी इंक्रीज करने का काम एंजियोटेंसिनोजिन का है. ओके, विच इज द प्रोटीन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर. तो समझ में आया सबको? ठीक है, आगे जाते.
Just a minute. So now we'll study the location. Okay, so endocrine system and chemical coordination. See here, ये जो glands मैंने जो कुछ भी आपको अभी बताया, endocrine glands, all these which are there, these are given in the chart here. Okay, so you can see here in this image. One minute, cursor खराब हो गया. So look at this diagram. So this is the hypothalamus. To the hypothalamus, this globular structure of the pituitary gland is attached. Okay, globular structure, ये पूरा जो है यहाँ पे ये हार्मोन स्टोर्ड रहता है ना, रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से आता है, फिर एंटीरियर लोब प्रोड्यूस करता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, पोस्टीरियर लोब विल स्टोर ऑक्सीटोसिन एंड प्रोजेस्टेरॉन, सॉरी ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच. ठीक है, तो ये जो ग्लोबुलर पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस. Hypophysis is the other name for pituitary, which is attached to the stalk, that is infundibulum. Okay, and this infundibulum is attached to the hypothalamus. Okay, got it? So this is the pituitary gland which is attached to the hypothalamus. Then this is the thymus. Neck region में located रहता है. Thymus नहीं, sorry, thyroid gland. Okay, thyroid gland के ऊपर dorsally 4 lobes रहते हैं parathyroid gland के. Then this is the thymus which is located in the chest region near to the heart. Okay, then pear-shaped gland, that is adrenal gland, location over the kidney. As they are present over the kidney, adrenal gland which is there, it is also known as suprarenal gland. क्या बोलते हैं? Suprarenal gland भी बोलते हैं उसको. Then here, this is the testis which is located in the scrotal sac. Okay, inguinal canal से वो बाहर आता है after 7 months of pregnancy is complete. Okay, then ovaries are present in the lower abdominal region, pelvic region में रहता है on the right and left side. So pair of testis and pair of ovaries. Ovaries in females and testis in males. Okay, so besides it, some other non-endocrine organs which are there. मैंने जैसे बोला, और नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से रहते हैं, जीआई ट्रैक्ट, gastrointestinal tract, then liver, kidney, heart, all these which are there, they produce certain hormones. GI tract का बहुत सारा hormones अभी अभी पढ़ा हम लोग ने, डिओक्रिनिन, पैंक्रियोजाइनिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसी कैसे डिनोट करते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन. Liver produces insulin growth hormone factor, insulin like growth hormone factor, and kidney erythropoietin, renin and calcitrol. Heart
atrial natriuretic factor, which is also involved in maintaining blood pressure. क्लियर है सबको? So this is another image wherein different endocrine glands are labeled. Pineal gland, pineal hypothalamus को attach कौन सा gland रहता है? Pituitary gland. Pineal gland which is there, it is attached to the epithalamus of diencephalon. Okay, diencephalon is a part of forebrain. Okay, diencephalon के फ्लोर को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस. डाइनसेफेलॉन के रूफ को क्या बोलते हैं? एपीथैलेमस. एपीथैलेमस. ओके, तो एपीथैलेमस को क्या अटैच रहता है? पिनियल ग्लैंड. Pineal gland. So pineal gland is attached to the epithalamus, which is roof of. What is epithalamus? It is roof of diencephalon. Okay, roof of diencephalon. समझ में आया? So floor of diencephalon is having, floor of diencephalon को क्या बोलते हैं? Hypothalamus. To the floor of hypothalamus, pituitary gland is attached, and to the roof of epithalamus, diencephalon is attached. Sorry, pineal gland is attached to the roof of diencephalon. Roof of diencephalon, which is there, it is known as epithalamus. Epithalamus. Clear है? इससे देखो प्लासेंटा विच इज देयर, प्लासेंटा प्रेगनेंसी के टाइम क्या फीटल डेवलपमेंट होता है, तो प्लासेंटा विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन, देन प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, ये सब प्रोड्यूस करने लगता है. सो एट दैट टाइम इट इज एंडोक्राइन. ओके, बाकी के टाइम जो है वो हेट्रोक्राइन. ऐसे एक्चुअली हेट्रोक्राइन वर्ड आपको सिलेबस में नहीं है, बट ये हेट्रोक्राइन का एग्जांपल प्लासेंटा. ठीक है, एंडोक्राइन व्हेन द प्रेग्नेंट यूटेरस इज देयर, एट दैट टाइम इट इज एंडोक्राइन. अदरवाइज when there is no pregnancy, at that time हेट्रोक्राइन बोल सकते हैं, मीन्स एक्सोक्राइन रहेगा वो, बिकॉज वहां पे कुछ ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग ठीक होता है, एंड देन इफ देर इज नो प्रेगनेंसी देर विल बी ब्लीडिंग. ओके, मीन्स menstrual phase will start. So no such hormones as such will be directly produced in large quantity by the inner lining of the uterus. ठीक है, so आपको सिलेबस में जो दिया है वो 3 एग्जांपल्स है, that is pancreas, ovaries and testes. ठीक है,
सो नाउ अभी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में. ओके, हाइपोथैलेमस का डिटेल स्टडी मीन्स विल बी लर्निंग ईच एंडोक्राइन ग्लैंड इन डिटेल नाउ. हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद थायराइड ग्लैंड, likewise each and every gland location, its structure and function will be discussing. But structure of pituitary gland we have to learn in detail. We don't have to learn structure of all the glands in detail. ठीक है? See here, this is the hypothalamus. Okay, hypothalamus contains neurosecretory cells. जैसे कि मैंने बोला nuclei which will produce neurohormones. Which neurohormones are produced? Releasing hormones, inhibiting hormones and ADH and oxytocin. ठीक है, ये हम लोग ने अभी अभी कवर किया. सिर्फ डायग्राम अच्छे से देख लो. See, this is the hypothalamus and this is the stalk, that is infundibulum, to which this globular part which is there, it is attached, and this globular part which is there, it is known as hypophysis. क्या बोलते हैं उसको? Hypophysis. Then two other types of hormones ये discuss किया, releasing and inhibiting hormones. I have explained you about the master endocrine gland, why it is called as master. Okay, then what is the location? Specific location पूछा तो ये भी discussion हो गया. इसका floor of the diencephalon है वो hypothalamus, located कहाँ पे? In the brain. ब्रेन का पार्ट है वो. बिलो द थैलेमी. थैलेमी आर द वॉल्स ऑफ डायनसेफेलॉन. डायनसेफेलॉन हैज रूफ, वॉल्स एंड फ्लोर. ठीक है. देन hypothalamus which is there, it is neurosecretory gland because it is producing, releasing hormones, inhibiting hormones as well as ADH and oxytocin. So this is clear. And this is the structure of the pituitary gland. So look at the diagram properly. देखो ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है. कहाँ पे लोकेटेड है ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स? हाइपोथैलेमस. So neurosecretory cells which are there, these are produced in the hypothalamus. Neurosecretory cells are present in the hypothalamus which produces ADH. So देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें ये ग्लोबुलर पार्ट है. ग्लोबुलर पार्ट में भी बहुत सारे लोब्स है. ओके, so this lobe which is there, this is smaller lobe. बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है और बीच में एक छोटा सा लोब रहता है, दैट इज पास इंटरमीडिया. ओके, गॉट इट. तो ये जो लोब है दिस इज द पोस्टीरियर लोब और ये बड़ा जो लोब है एक्सटेंडेड, दैट इज द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. ओके, तो छोटा है ना पोस्टीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब इज रिसीविंग the neurosecretory cells which are coming from hypothalamus. Okay, so ये neurosecretory cells है, means neurons है. neurons कैसे रहते हैं? They are having cyton and axon. Axon which is there, it will be branch at the end. branch रहता है और swollen ends रहते हैं उसको. ठीक है. These swollen ends which are there, these are storing the ADH and oxytocin for some time. Okay, so इसको क्या बोलते हैं? Herring's body. Herring's bodies. What are Herring's bodies? These are the swollen telodendrons of neurosecretory cells. Okay, so neurosecretory cells means neuron which are coming from the hypothalamus
towards the posterior lobe of the pituitary. Okay, so न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के ये जो टेलोडेंड्रॉन है, टेलोडेंड्रॉन, what is टेलोडेंड्रॉन? टेलोडेंड्रॉन are the swollen parts. टेलोडेंड्रॉन ये क्या है? swollen part है. Okay, these telodendrons are having special name, that is Herring's bodies. Herring's bodies will be entering in the posterior lobe of the pituitary, and there will be release of ADH and oxytocin. ADH and oxytocin यहाँ पे release होगा, and then this ADH and oxytocin will enter in the bloodstream. तो यहाँ पे bloodstream में वो enter हो जाएगा. समझा? So is it clear? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहाँ से आ रहे हैं? हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? posterior lobe of the pituitary. They are having swollen ends. What are the swollen ends known as? Telodendron, swollen ends of neuron. Okay, but this is the special neuron which is producing ADH and oxytocin. Okay, and storing this ADH and oxytocin in this telodendron. So these telodendrons are having special name, that is Herring's bodies. Herring's bodies. Okay, and these Herring's bodies will then release ADH and oxytocin. So ADH and oxytocin will be then entering in the bloodstream. Okay, ये हो गया posterior lobe का. अब ये anterior lobe देखो, ये anterior lobe है ना. Okay. अब ये एंटेरियर लोब से भी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आ रहे हैं, एंड दीज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स व्हिच आर देयर, दीज आर प्रोड्यूसिंग releasing hormone and inhibiting hormone. Okay, so releasing hormone and inhibiting hormone are produced from the hypothalamus and they are carried here, okay, towards the posterior lobe. But how they are carried? They are firstly entering in the blood. Okay, so आपको ये नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज दिख रहा है यहाँ पे. कितने नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज दिख रहे हैं आपको? दिस इज वन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ blood capillaries. Okay, so this is the one network of blood capillary and this is the another network of blood capillary. So how many network of blood capillaries are there? Two network of blood capillaries. ठीक है, so this which is whatever releasing hormone and inhibiting hormone which is produced by the hypothalamus, these are firstly entering in the first network of blood capillaries. Okay, and these network of blood capillaries will carry this releasing hormone and inhibiting hormone to the another network of blood capillaries which is scattered in the anterior lobe of the pituitary. Anterior lobe of the pituitary. Okay, so इसीलिए उसको क्या बोला है? पोर्टल सिस्टम. So पोर्टल सिस्टम कहाँ पे है? In the pituitary gland. What is the other name for pituitary gland? Hypophysis. What is the other name for pituitary gland? Hypophysis. Okay, so hypophysis which is there, hypophysis is having the two network of blood capillaries. Okay, so हमेशा याद रखो पोर्टल सिस्टम consists of network of blood capillaries which are at the starting and at the end. Okay, so portal system starts from blood capillaries and ends in network of blood capillaries. Okay, so ये blood vessel है, वो divide हो रहा है blood capillaries में, फिर से वो end में divide हो रहा है दूसरे network of blood capillaries में.
तो वैसे वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम. ओके, so portal system which is there, it is porting the hormones from the hypothalamus in the pituitary. Okay, got it? Pituitary को दूसरा नाम क्या है? Hypophysis. So can I say this portal system as hypophyseal portal system? Hypophyseal portal system. Hypophyseal portal system. Okay, क्लियर है सबको? रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन पोर्टल सिस्टम थ्रू आते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में. मीन्स दे आर फर्स्टली एंटरिंग इन द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज and then they will be entering through the different veins which will come out from these capillaries, and these veins again will divide into capillaries. Okay, got it? ऐसे होता है. एंड ये वाले कैपिलरीज में फिर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा उसका हार्मोन. फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आया ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से यहाँ पे पिट्यूटरी में, ठीक है? तो पिट्यूटरी में आने के बाद पिट्यूटरी इज प्रोड्यूसिंग टीएसएच, सो दैट टीएसएच विल एंटर in the next network of blood capillaries, means this big one, and then that TSH will be carried to the thyroid gland for functioning purpose. Clear है सबको? Any doubts here? Okay. So न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स की वजह से फंक्शनिंग हो रहा है सब, एंटीरियर लोब का भी और पोस्टीरियर लोब का. अगर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स नहीं रहते तो देयर विल बी नो प्रॉपर फंक्शनिंग. ओके, तो कितने लोब्स है? सॉरी, एक मिनट. सी हियर, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका ये लार्जर लोब है, बराबर? सो ये बड़ा सा लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का. Just a sec, students. This is the anterior lobe. Okay, anterior lobe है, बट बीच में इंटरमीडिएट लोब भी रहता है ये वाला, जो कि अंडर डेवलप रहता है अपने में. It is underdeveloped. I'll indicate by yellow color here. So this is the pars intermediate lobe, which is rudimentary in human beings. It is very well developed in amphibians and lower vertebrates, in some reptiles also it is developed. ठीक है? Then ये क्या है? This is the posterior lobe. So posterior lobe ये वाला है, posterior lobe. Anterior lobe I have indicated by green color. This is the anterior lobe. And yellow one is the pars distalis. Pars intermedia. ये pars intermedia. Pars intermedia. Okay. Anterior lobe which is there, ये बड़ा सा extended part जो है anterior lobe का, इसको क्या बोलते हैं? Pars distalis. Pars distalis. Okay. And posterior lobe का ये globular part है, उसको क्या बोलते हैं? Pars nervosa. Nervosa.
Okay. So स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोग ने ये सारा पार्ट्स स्टडी किया. So in next lecture we'll talk the summary of this particular pituitary gland. वो कहाँ पे ये हार्मोन्स वगैरह सब है, टारगेट ऑर्गन्स क्या है, वो हम लोग स्टडी करेंगे. Don't leave the meeting, wait. Okay. So revise and come for the lecture students. Saturday को मैंने बोला last half an hour for first 5 lectures of excretion and osmoregulation. ठीक है. फर्स्ट 5 लेक्चर्स यूट्यूब चैनल है, उधर से वॉच करना है आपको. एंड कुछ डाउट रहेगा तो क्लियर कर लो. एंड फर्स्ट 1 आवर जो कुछ भी रहेगा वो उसका आगे का ये जो टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे. विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट. सो आई विल सेंड द पीडीएफ ऑन द ग्रुप ऑफ दिस लेक्चर. So please revise the topic. और होमवर्क जो है आपको, what is the homework? You have to draw neat label diagram of pituitary gland. pituitary gland का अच्छे से डायग्राम निकाल के आपको रखना है बुक में. ठीक है. और आपको अगर लिखना है तो you can write the notes also if you want. कैसे ना नोटबुक में रहेगा ना ये नोट्स तो अच्छा रहता है. मीन्स यू हैव होल वन कंटेंट ऑफ zoology in that. ओके. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स. बाय. वेलकम.